Hey smart learners, how are you all? I hope you are doing well with your studies. Here again, I'm your Sabha ma'am from Studyville Academy, presenting here with the new aura with positiveness to speak in English fluently. Are you ready to learn now every day? Every day you learn something new from me? Well, I'm glad to see you the new face in my comment box each day. Thank you very much for learning and also liking me. Okay, now we are going to discuss here. Any guesses for today's class? Which class it is today? In the last class, we have discussed about the tense and time, the difference between tense and time. You all know that क्या difference हम पढ़े थे tense और time के अंदर, and also we have discussed a lot of thing about the what four forms of the verb. The new thing is that what is I have what we have taught in our last class that the four aspects about the rules and regulation of the aspects. Now in this class, any guesses? Now we are discussing here our new topic, tense and time, and all the rules and formulas of present tense, past tense, future tense. Okay, so today's topic is, according to the tense and time, we are going to discuss here discuss here about present tense, past tense and future tense. So what is it? Let's do it here. It is tense and time. We know that tense, what is tense? Tense is the changing of verb. I have told you in my previous class, it is the changing of verb according to the time. Time के हिसाब से जो change आता है verb में, the standing of the verb. The standing of the verb according to the time. And the time is the finishing of action. It is the standing of action. कब stand कर रहा था? कौन सा verb है? is, am, are है कि has, have है? जौन से पोजीशन में है उसको हम बोलते हैं standing of verb. ठीक है? According to the time, the standing of action. And the time is finishing of action. Action कब खत्म हुआ? पास्ट में खत्म हुआ या प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में खत्म होगा. ठीक है. सो देयर इज द लिटिल मच डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस that I have discussed in my previous class. Now we are going to discuss here the rules and regulation and the formulas of the four forms and how to make from negative sentence, the affirmative sentence to negative sentence, affirmative sentence to interrogative sentence. Now I am going to discuss here the new formulas. Okay, watch it carefully because it is most important for you. ये आपके लिए बहुत ही important है because ये जो formulas है ना fundamental है. You have to clear it from now. Okay. It will help you to enhance your speaking power also. आपका जो talking power को ये बढ़ाएगा because you have to thorough in this tense and time. Okay, it's most important. So tense and time, we have discussed about that, and already we have discussed some dialogues according to the tense and time. Now I am going to discuss here the present tense and the past tense, the difference between present tense and past tense and how to use it in formulas. Okay, now do it. Present tense versus past tense. Only I am discussing here about present tense and past tense. Later in our further class, we will discuss about the future tense. This is the latter class. But here you have to know about the present tense and the past tense. इसके अंदर difference क्या है? ठीक है, इसको हम पहले ये fundamental को clear करेंगे. उसके next class में हम future को जाएंगे. ठीक है? So what is the tense here and what are the four forms? I have already discussed about the four aspects. You know the four aspects: the instantaneous aspect, the unfinished aspect, the finished aspect, and the partly finished and partly continuing aspect. तो four aspects का मतलब क्या है? हम डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्लास में. You have to thorough it. तो four aspects are the four form.
हमारा फोर फॉर्म जो होता है, क्या है फोर फॉर्म, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। फोर फॉर्म, द फोर forms of the verbs. So what are the four forms of the verb? First we write here, only the present tense को लेके हम करते हैं. Simple, present, simple, present, progressive, present perfect, progressive. Okay, these are the four forms of the verb. Simple present, present progressive, present perfect progressive. Here also, इसमें भी वही है. Past tense में simple past, past progressive, past perfect, past perfect progressive or continuous. Okay, so these are the four formulas or four forms of the verb according to the four aspects. Simple present, simple past versus present progressive, past progressive, present perfect, past perfect, present perfect progressive, past perfect progressive. इसका मतलब क्या है? Simple present मतलब all the, I have told you in my first class, remember the second class, remember that the simple present and past, present tense, past tense, daily life and the work you done yesterday, today, yesterday, today, yesterday. So what is this? Today, and it is yesterday. All the work you done, you are doing in your day-to-day life, your daily routine. Your daily routine means your today. And here, yesterday. Yesterday means all the work you have done according to your daily routine in the past. Yesterday, कल तुमने क्या किया, वो आ जाता है आपका पास्ट में, ठीक है. और ये है आपका डेली रूटीन जो आप करते हो और कर रहे हो, ठीक है. ये हो जाता है तुम्हारा टुडे. तो इट इज द डिफरेंस. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन माय क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस. सो अकॉर्डिंग टू दैट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इसका मतलब होता है द वर्क वी आर डूइंग इन आवर डे टू डे लाइफ एंड द वर्क ऑलरेडी वी हैव डन, खत्म हुआ हमारा, कब ना, हम करते हैं, करते थे, हैबिचुअल एक्शन, लेकिन पास्ट में, ठीक है. एंड हियर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, दैट मीन्स योर वर्क इज कंटिन्यूइंग, अभी जो चल रहा है. द एस्पेक्ट इज अनफिनिश्ड एस्पेक्ट, काम खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है. एंड पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट में चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था हमारा काम, ठीक है. इसको बोलते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव. एंड हियर प्रेजेंट परफेक्ट, दैट मीन्स द वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ऑलरेडी फिनिश्ड, खत्म हो चुका है. और ये पास्ट में हमारा काम खत्म हो चुका था. माई वर्क हैड डन, खत्म हो चुका था इन द पास्ट, ठीक है. एंड हियर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब पार्टली कंटिन्यूइंग, पार्टली फिनिश्ड, पार्टली कंटिन्यूइंग. द एस्पेक्ट, द फोर्थ एस्पेक्ट मतलब आधा हम स्टार्ट किए थे लेकिन अभी चल रहा है. टिल नाउ माई वर्क इज नॉट डन, आई हैव स्टार्टेड माई वर्क बट टिल नाउ इट इज कंटिन्यूइंग. और पास्ट में क्या है? I had started, मैं काम शुरू करी थी
इन द पास्ट वो कंटिन्यू चल रहा था, एट दैट टाइम मेरा काम खत्म नहीं हुआ था इन द पास्ट। तो ये भी आ जाता है, क्या हो जाता है ना, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। सो व्हाट आर द फॉर्मूलाज? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर व्हाट आर द फॉर्मूलाज हियर। सी इट केयरफुली माय फॉर्मूलाज। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइटिंग हियर जस्ट फॉर्मूला। व्हाट, आपको पता है फॉर्मूला में क्या होता है ना, सब में सब्जेक्ट रहता है। हाँ, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, इट इज फॉर सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1। ओके, नाउ हियर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा आपका, I, we, you, he, she, they, it, ये सारा आ जाएगा आपका V1 सब्जेक्ट में, प्लस V1। यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस, सेम हियर सब्जेक्ट में जो भी है सब्जेक्ट्स I, we, you, he, she, they, it, okay, and all the singular nouns and all the plural numbers जो भी आएगा सब में उसके साथ में लग जाएगा V2। That means the second form of the verb। अगर जब हम यहाँ पर वो है तो हम यहाँ लगाएंगे went। Went is the V1 is the go, V2 here is the went। यहाँ पर हम लगाएंगे V2, ठीक है। Then what is the formula of present progressive? काम हमारा चालू है तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस, ओके, चलो हम इसको थोड़ा से क्लियरली लिखते हैं, ठीक है। क्लियरली वन बाय वन हम लिखते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट यू हैव टू क्लियर इट ना विथ सम एग्जाम्पल्स। सो सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V2। हियर I go to park, I go to park every day, हर दिन मैं पार्क जाती हूँ, मैं पार्क जाता हूँ। इट इज योर हैबिचुअल एक्शन। तो यहाँ पे लगा आपका सब्जेक्ट प्लस V1 इक्वल टू गो। ओके, क्लियर? हियर ऑल्सो सिंपल पास्ट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2, I went to park, मैं पार्क गया, went is the subject प्लस V2 हो गया आपका, went हुआ, go का went। हाँ, so according you clear from this example? Now I am going to take example of simple present. It is the first form of the verb. It is the first form. Now we are discussing here the second form. So what is second form? Second form is present progressive. Present progressive का formula क्या है? Subject plus is, am, are plus is, am, are plus किसमें लगेगा? We, is, am, are subject plus is, am, are plus ing plus V1. So subject plus is, am, are plus ing plus V1. Remember this formula. That means I के पास में क्या लगेगा? I am going. Go में क्या लगा? Subject plus verb plus ing. Subject plus is, am, are plus verb plus ing. Okay, verb plus ing. Verb plus ing. Okay, I am going. Go में लगा verb, V1 में ing. Going to market. Okay, I am going to market. Subject plus is, am, are. Sorry, मैंने थोड़ा अल्टर कर दिया था यहाँ पे. Subject plus is, am, are plus verb plus ing. I am going to market. मतलब मैं मार्केट जा रही हूँ. मैं अब भी क्या कर रही हूँ? My work is progressing. I am going to market. Here वैसे ही क्या चेंजेस आ जाएगा?
इज एम आर का बस हमको पास्ट टेंस करना है. इट इज द बी फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसको हम क्या बोलते हैं? बी फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज एम आर इन द पास्ट में हो जाएगा was were. इसको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड द बी फॉर्म ऑफ द वर्ब. रिमेंबर दैट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे चेंजेस? जस्ट वी हैव टू चेंज हियर द फॉर्मूला इन द सेकेंड फॉर्म. व्हाट? सब्जेक्ट प्लस is am के बदले में लगाएंगे we alter it in the past tense. Here the past verb of the be form is was or were plus v1 plus ing. So let's take an example. I am going to market. I was going to market. I am का क्या हो जाएगा यहाँ पर? I was going to market. So I was going to market. That means मैं मार्केट जा रही थी. At that time I was going to market. उस टाइम में मार्केट जा रही थी. In the past. ठीक है. So हो गया क्लियर. यहाँ पे is am are subject plus is am are plus v1 plus ing. According to that I am going to market. मैं मार्केट जा रही हूँ. प्रोग्रेसिव. और प्रोग्रेसिव में पास्ट में क्या हुआ? द पास्ट द बी फॉर्म का बी वर्ब. इसको बोलते हैं बी वर्ब. बी वर्ब. हाँ, बी वर्ब का is am are एंड इट इज पास्ट में हो जाता है was were. I was going to market. मैं मार्केट जा रही थी. So टू फॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस हुए. क्लियर करें. नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म. ओके. You all remember it well, huh? It is most important for you to remember all these formulas. It is most important. Do practice again and again for the examination. Okay. It is most important for you. So dear students, now we are going to discuss here the third form of the verb. The third form of the verb. What is the third form of the verb? Third form is present perfect. Present perfect. And here third form is the past perfect. Past perfect. Okay, the present perfect and the past perfect. So according to the present perfect, what is the formula? The formula is subject plus has or have plus has have plus we. So every verb has the थ्री फॉर्म्स. हर वर्ब का थ्री फॉर्म्स होता है. ओके, पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, देन आई विल डिस्कस हियर. सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3. इसका क्या हो जाएगा इन द पास्ट टेंस? व्हाट द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस सी. हियर इट इज इन द प्रेजेंट टेंस. इट इज इन द प्रेजेंट टेंस हैज हैव. वी जस्ट पुट इट हियर द पास्ट टेंस ऑफ द हैज हैव. हम बस पास्ट टेंस डालेंगे. किसका? हैज हैव का पास्ट टेंस यहाँ लगाएंगे. ठीक है, बस यहाँ पर हैड ही चेंज करना है और जो है V3. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ माय क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज V1, V2 एंड V3? सो हियर इफ आई एम राइटिंग go is the V1, V2 is the went and V3 is the gone. Go, went, gone. Do, did, done. You all know that it is the fundamental. The three V's, V1, V2, V3. So here हम यहाँ लगाएंगे क्या? The V3 of the verb. क्या लगाएंगे? Subject. Subject means
then take another word he. ठीक है, तो he लगाएंगे. he के पास में क्या लगेगा, जल्दी बोलो, और had. ठीक है, प्लूरल के पास में लगेगा have. लेट टेक इट they. they मतलब have लगेगा वहां पे. they have gone. they have go went. gone हम लिए हैं, gone को लेके करते हैं. they have gone to कोलकाता. they have gone to कोलकाता. वो कोलकाता जा चुके हैं. दैट मीन्स उनका कोलकाता जाने का काम फिनिश हो चुका है. they have gone to कोलकाता. उन लोग कोलकाता जा चुके हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, उसी को लगाओ. they had gone to कोलकाता. ओके, they had gone to कोलकाता. उन लोग कोलकाता जा चुके थे. in the past कोलकाता जा चुके थे. you understand now? subject plus has plus V3, they have gone to कोलकाता. subject plus had just change करना है, यहाँ पे has के बदले में had लगाना है, nothing else. ठीक है, subject plus had plus V3, they had gone to कोलकाता. वो gone लग गया यहाँ पे, V3 लगा gone, V3 लगा gone. ठीक है, तो they had gone to कोलकाता. वो कोलकाता जा चुके थे. so it is completed the third form. now we proceed to the fourth form. okay, remember all the formulas, and according to the formula we do some examples that you have to clear the fundamental. okay, that to be clear your fundamental. you understand, and remember it and practice it well again and again. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे. ठीक है, एंड फ्लुएंसी भी हमारा उतना अच्छा होगा. नाउ हियर फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब. द fourth form. what is the fourth form? here present perfect progressive or present perfect continuous. the aspect is partly finished, partly continuing. that I am saying that आधा काम खत्म हो चुका है और आधा चल रहा है, अब तक खत्म नहीं हुआ है. हाँ, so that is the aspect. fourth form is present perfect progressive. okay, present perfect progressive or continuous. progressive, present perfect progressive, and here past perfect progressive. past perfect progressive. so present perfect progressive, what is the formula of present perfect progressive? let's do it. subject plus has or have plus been plus verb plus ing. subject plus has have plus been plus verb plus ing. मैं क्या बोली थी आपको, पास्ट टेंस में क्या करना है, जस्ट यू हैव टू चेंज हैज हैव, नथिंग एल्स. सब्जेक्ट प्लस हैज, बस चेंज हो गया. हाँ, इज अ पास्ट टेंस ले आए, हैज हैव का पास्ट टेंस कर दिया. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 plus ing. clear? V1 plus ing. okay, now do some example here. I have, यहाँ पे कुछ लगा दो, दूसरा नाउन नेम ले. सरिता. has, सरिता के पास में has लगेगा. we right here has. Sarita has been cooking Sarita has been cooking since morning.
since morning. सुबह से सरिता क्या कर रही है ना, खाना बना रही है. स्टार्ट की है सुबह से बनाना, अब तक उसका खाना बनाने का काम फिनिश नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है. Sarita has been cooking since morning. Sarita has been cooking since morning. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, उसी को चलो चेंज करते हैं और समझाते हैं क्या है. Sarita had been cooking since morning. Since morning, yesterday when I visited her house. समझ में आ गया. Sarita has been cooking since morning. That means Sarita सुबह से खाना बना रही है. ये मेरा ओपिनियन है. क्यों? मैंने देखा सरिता का खाना बनाना अब तक चल रहा है. Sarita is now, that means still now, she is cooking from the morning since now. Since morning, morning से उसका खाना बनाना शुरू हुआ है. Till now she is continuing in cooking. अब तक उसका खाना बनाना चल रहा है. बट पास्ट में उसी को थोड़ा डिस्कस करते हैं. क्या हुआ? Sarita had been cooking since morning yesterday when I visited her house. मैं जब सरिता के घर गई कल, वो सुबह से खाना बना रही थी. At that time उसका खाना बनाने का काम चला हुआ था. When I visited her house yesterday, Sarita was busy in cooking. सरिता खाना बनाने में बिजी थी because she had been cooking since morning yesterday. कल सुबह से वो खाना बनाने का काम उसका चला हुआ था. When I visited her house, जब मैं उसके घर पहुंची थी, उसका खाना बनाने का काम चल रहा था. In that sense, we are using the past perfect continuous tense or past perfect progressive tense. That means in that time, in the past, in yesterday, on yesterday or in the past में क्या हो रहा था? काम चला हुआ था, खत्म नहीं हुआ था. In that sense, only we are using the past perfect progressive form. You clear from this line, from this example? Here अभी चल रहा है, प्रेजेंट में शुरू होके खत्म नहीं हुआ है. Still now the working is continuing. Sarita has been cooking since morning, but Sarita was क्या कर रही थी? कल क्या कर रही थी? Sarita had been cooking since morning. काम उसका चला हुआ था. हाँ, yesterday when I visited her house. You clear from this line? Okay. Now we are going to discuss here more interesting things. Now you clear from the present tense versus past tense. Four form के बारे में we discuss about the four forms, that the four according to the four aspects. We have done already the four forms, the formulas of the four forms, and according to this we have done some examples here. Now you clear from this, and students, my dear friends, do it well, do it practice again and again. Okay, it's most important for fluency in English. I have told you, grammar is the confidence, grammar builds confidence, and fluency is the makes the superpower. How we get the superpower in fluency? कैसे हम पाए फ्लुएंट इंग्लिश? कैसे हुए? When we clear the foundation of the grammar about the tense and time and all the grammars, जब हमारा क्लियर हो जाएगा तब हमको वो सुपर पावर मिलेगा स्पीकिंग फ्लुएंटली इन इंग्लिश. ओके, नाउ माय मोटो इज दैट. But here now I am going to discuss some more interesting things according to grammar in day-to-day life. हम हर दिन हम कैसे ग्रामर को यूज करते हैं, ठीक है, इन आवर डेली लाइफ.
It's more important and interesting classes. Okay, so you all have to remember this again and again. Okay. Now I am going to discuss here how to make questions, interrogative and negative from affirmative sentence. So what is affirmative sentence? Affirmative sentence means is a simple sentence, is a common sentence. All the common sentences are called, the simple sentences are called the affirmative sentence. So changing the affirmative sentence to negative sentence and to interrogative sentence according to the present tense and past tense. Today only we are discussing here what is the difference, कैसे हम change करें, and do some examples here. Do remember it, it's also most important topic here. So my dear students, I am going to do here changing affirmative sentence negative and interrogative. Okay, affirmative sentences to negative sentences and interrogative sentences. Okay. The past tense में कैसे change करते हैं? So negative sentence, interrogative sentence. Negative sentence मतलब affirmative sentence. Affirmative sentence क्या होता है? All the simple sentence. All the simple sentences. Negative sentence means वहाँ पे क्या लगता है? Not लगता है. Not. Verb के साथ में लग जाता है not. We use verb plus not. और starting में लगता है from the beginning of the sentence में no use करते हैं. Okay. Interrogative में क्या होता है? Interrogative में होता है हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, question में do और does का यूज करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट. ओके, देन सब्जेक्ट के बाद में आपके आ गया वर्ब, जो भी आपका आता है वर्ब. ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, जो भी आता है ऑब्जेक्ट. वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट होता है नो लगा के और नॉट लगा के. वर्ब प्लस नॉट प्लस यहाँ पे नो लगा के जब क्वेश्चन करे लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप रहता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में रिमेम्बर दैट क्वेश्चन मार्क रहता है इंटरोगेटिव में. जस्ट आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्मूला हियर एंड आई विल इलेबोरेट हियर इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस उसका कैसे यूज हम करते हैं. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स.